हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजनंदिनी एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की. So we have already discussed in this chapter what is polygon and types of polygons. Then we discussed interior and exterior sum of angles of a polygon. In this part we are going to discuss what is quadrilateral and different types of quadrilateral. So first you have to tell me what is quadrilateral. So क्या था quadrilateral? Quadrilateral is a type of polygon. क्या था quadrilateral? It is a type of polygon. और polygon क्या था? Polygon is a simple closed curve and which has 3 or more than 3 sides. What if a polygon has 4 sides? Then we call it as quadrilateral. क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रिलेटरल. और जो हमारे चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? जिस भी फिगर की 4 साइड्स हो और वो क्या हो? सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, उसी के बारे में आपका ये पूरा चैप्टर है. तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी. और एंगल्स कितने होंगे? सी 1 2 3 और 4. कितने एंगल्स हो गए हमारे पास? 4 angles. So quadrilateral has 4 sides, 4 edges and 4 angles. इन्हीं quadrilateral को हमने 4 parts में divide किया है. First one is trapezium. Next one is isosceles trapezium. Then third one we have kite. Kite तो आप सब लोगों ने देखी होगी. Kite के अंदर कितने sides होती हैं? 4 sides होती हैं. Then we have parallelogram. So first one is trapezium. What is exactly trapezium? ये नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई मिसाइल का नेम है. ये किसी मिसाइल का नेम नहीं है. ये किसका नेम है? क्वाड्रिलेटरल का नेम है. और क्या होती है ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम में आपको क्या देखना है? अपोजिट साइड्स को देखना है. किसको देखना है? अपोजिट साइड्स को देखना है. अगर अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, देन वी कैन से इट इज अ ट्रेपेजियम. इसके अंदर क्या होगा? जो अपोजिट साइड्स का एक पेयर होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा. सी, ये 2 साइड्स ऐसे भी हो सकती हैं और ये 2 साइड्स ऐसे भी हो सकती हैं. आप किन्हीं भी 2 साइड्स को लो, अगर वो 2 साइड्स क्या है? पैरेलल है और ये साइड्स कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन से इट इज अ ट्रेपेजियम. नाउ नेक्स्ट वन इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम. अब देखो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, तो इसके अंदर आ तो ट्रेपेजियम ही रहा है. तो ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो. तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. तो हमने क्या देखा? ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम में आपको क्या देखनी है? अपोजिट साइड्स देखनी है. अगर अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, और तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम. और व्हाट अबाउट आइसोस्केलस ट्रेपेजियम? इसमें आप अगर नोट करोगे तो ट्रेपेजियम वर्ड ऑलरेडी आ रहा है. ट्रेपेजियम वर्ड क्या है? कॉमन है इसके अंदर. तो इसके अंदर क्या होगा? अपोजिट साइड्स तो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और जो रिमेनिंग 2 साइड्स होंगी उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. सी हियर वी हैव ए बी पैरेलल टू सी डी. ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक पेयर क्या हो? पैरेलल हो, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रेपेजियम हो जाएगा. और जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, कौन कौन सी रिमेनिंग साइड्स हैं? ए डी एंड बी सी. इन दोनों रिमेनिंग साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. तो देखो ए डी की लेंथ है सी एंड व्हाट अबाउट बी सी? उसकी लेंथ भी क्या है? सी. तो ये क्या हो गया? ये हमारा टाइप हो गया आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का. नाउ नेक्स्ट वी हैव काइट. काइट तो आप सब लोगों ने देखी होगी. काइट के अंदर क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मींस दिस एंड दिस वन. मतलब इसका जो एक कॉर्नर होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा. तो कोई भी 2 साइड्स का कॉर्नर, कोई भी आपको एक पेयर लेना है, अगर ए बी और ए डी इक्वल है, इसमें क्या होंगे? 2 पेयर्स बनेंगे साइड्स के, और जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल इन लेंथ. सी हियर वी हैव 2 पेयर्स AP and AD, BC and CD. तो अगर कोई भी 2 पेयर्स लो, अगर वो इक्वल हो लेंथ के अंदर, then only we can say it is a type of kite. See, here we have AB equivalent AD and BC equivalent CD. What about this figure?
वी कैन नेम इट PQRS. अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी साइड्स हैं जो इक्वल है. Here we have PS equivalent SR and next pair is PQ equivalent QR. So it is a type of kite. Next we have parallelogram. अब देखो parallelogram के अंदर जो नेम है इसके अंदर क्या आ रहा है, पैरेलल. पैरेलल क्या होंगी, पैरेलल होंगी हमारी साइड्स. इसके अंदर कितनी साइड्स होती है पैरेललोग्राम के अंदर, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स है हमारी, 4 साइड्स हैं. तो ये जो 4 साइड्स हैं इसके अंदर आपको क्या करना है, जो अपोजिट साइड्स हैं. सी हियर वी हैव ए बी, ये किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा. और कौन सा बच गया, ये बच गए हमारे पास ए डी एंड बी सी. तो ये भी क्या होता है इसके अंदर पैरेलल होंगी. अपोजिट साइड्स क्या होंगी पैरेललोग्राम में, हमेशा पैरेलल होंगी. हमने जो ट्रेपेजियम की बात की थी, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. यहाँ पे आपके पास 2 अपोजिट साइड्स के पेयर है और वो दोनों ही क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए. क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में. सी ये है हमारा क्या, ये है हमारा ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में सिर्फ जो वन साइड ऑफ पेयर होती है, जो अपोजिट साइड होती है, इसमें एक ही पेयर क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा. बट अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, इसके अंदर कितने बनेंगे, 2 पेयर्स बनेंगे और दोनों के दोनों पेयर्स क्या होंगे, साइड ऑफ पेयर, अपोजिट साइड ऑफ पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे. और अब ये जो पैरेललोग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. अपोजिट मीन्स दिस ए बी इक्वलेंट सी डी, अपोजिट साइड्स कौन सी है, AD equivalent BC and this AD equivalent BC. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया पैरेललोग्राम के लिए. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इसके अपोजिट साइड्स का जो मेजरमेंट होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा. देन नेक्स्ट वी हैव अपोजिट एंगल्स. व्हाट वी हैव, अपोजिट एंगल्स. सो दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस एंड दिस एंगल अपोजिट टू दिस. First of all, tell me one thing. What's the meaning of adjacent angle and what's the meaning of opposite angle? Adjacent means जिसके अंदर क्या होगा, एक कॉमन क्या होगी आपकी, कॉमन साइड होगी. अगर मैं A और B की बात करूं तो यहाँ पे क्या एक कॉमन साइड है. बट अगर हम बात करें A और C की, इसमें कोई कॉमन साइड नहीं है. तो ये कैसे एंगल हो गए, ये एंगल हो गए हमारे अपोजिट एंगल्स. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. Then next we have sum of adjacent angles. Adjacent का मतलब क्या बताया मैंने आपको, adjacent का मतलब बताया जिसके अंदर कॉमन क्या हो, एक साइड हो. तो देखो A और B, इन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन साइड है. तो क्या हो गया, ये A और B का सम कितना होगा, 180. कितना होगा, 180. सी B एंड C, B और C में भी क्या है, एक कॉमन साइड है. क्या है, कॉमन साइड है. तो B और C का एंगल सम कितना होगा, इट इज ऑल्सो 180 डिग्री. नाउ व्हाट अबाउट C एंड D, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो ऑल द एडजेसेंट एंगल, व्हाट्स द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री. देन नेक्स्ट वी हैव अबाउट डायगोनल्स. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. Diagonal means when you join opposite corners. See, this one and this one. These two are opposite corners. Just join them. This and this join. ये क्या करते हैं, equal parts में divide करेंगे. This part is equal to this and this part is equal to this. AO is equivalent OC. क्या होता है ये, AO equivalent OC and OT equivalent OB. क्या होगा इसके अंदर, ये जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS. PQRS. सी मैंने आपको क्या बताया था, पैरेललोग्राम के हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं. 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी है. फर्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. Then second one is opposite angles are equal and third one is sum of adjacent angle is always 180 degree. Then we have discussed about diagonal. Diagonal always bisect each other.
So in this, what we have to use? See, what we have to find? Perimeter. What's the meaning of perimeter of any figure? Perimeter means sum of all sides. If this one is 12, this one is also 12. Can you please give me the reason for this? Reason is opposite sides of a parallelogram is always equal. If this one is 12, this one is also 12. And this one is 7. What about this side? This one is also 7. Now, what's the meaning of perimeter of any figure? Sum of all sides. So, what's the perimeter of PQRS? It is sum of all sides. So, 12 plus 7 plus 12 plus 7. So, what's the answer? 12 plus 7, it is 19. 19 plus 12 and plus 7, it is 38 centimeter. Now, next question we have. In figure BEST is a parallelogram. Find the values of X, Y, Z. This time you have to find the measurement of the angles. Here we have 100 degree and you have to find X, Z and Y. First of all, tell me, I told you, what is the measurement of opposite angle? So, measurement of opposite angle is always equal. If this one is 100, this one is also 100 degree. Now, I told you one more thing, that sum of adjacent angle is always 180 degree. If this one is 100, what about Z angle? It is Z angle plus 100 degree. It is equal to 180 degree. Now, how can you find the Z? 180 minus 100 degree. So, what is 180 minus 100? It is 80 degree. So, angle X is 100 degree. Angle Z is 80 degree. Now, what about Y? अगर आप एंगल Y और Z को ढंग से देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसे पेयर है. ये एक लीनियर पेयर है. So, angle Y plus angle Z, it is equal to 180 degree. And what's the reason? Because these two angles are linear pair of angles. So, what is the measurement of angle Z? It is 80 degree. So, what is the measurement of angle Y? It is 180 minus 80 degree. It is equal to 100 degree. Now, next question. In a parallelogram RING figure, if measurement of angle R is equal to 70 degree, find all the other angles. What you have to do? You have to find the measurement of every angle. See, if this angle is 70 degree, I told you earlier also that opposite angles of a parallelogram are equal. If this one is 70, this one is also 70. Now, what about this and this angle? I told you sum of adjacent angle is always 180 degree. If this one is 70 degree, and what about angle R plus angle I? These two are equal to 180 degree. Angle R is 70 degree. And angle I we have to find. So, angle I is equal 180 minus 70 degree. So, 180 minus 70, it is equal to 110 degrees. So, what is the measurement of angle I? It is 110. And opposite angles of a parallelogram are always equal. So, this angle equal to this. This one is also 110 degree. Now, next question. In figure HELP is a parallelogram. Given that OE is equivalent 4 and HL is 5 more than PE, find OH. What we have to find? We have to find this OH. And what is given? This OE. What is OE? It is 4 centimeter. See, if this one is 4 centimeter, this one is also 4 centimeter. What's the reason? I told you both the diagonals of a parallelogram are bisect each other. If this one is 4, this one is also 4 centimeter. Now, what about HL? It is written HL is 5 more than PE. So, what is the length of PE? See, here we have P and here we have E.
So 4 plus 4, that is 8. And it is written HL is 5 more than PE. 5 more than, that means you have to add 5 in the length of PE. What's 8 plus 5? It is 13 centimeter. Now, what we have to find? Here we have to find OH. How can we find OH? It is just half of OHL. It is just half of HL. So, OH is equal to half of this HL. Why it is half? Bisect करता है ना, bisect means two equal parts. So 13 upon 2, which is equal to 6.5 centimeter. So what is the measurement of OH? It is 6.5 centimeters. Now next, what we have learned in this part? We have learned types of different quadrilaterals. So what's the meaning of quadrilateral? It is a type of polygon which has 4 sides. So let's check how many questions you can do. First question is, a 6-sided figure is called, what it called? It is hexagon. Now next question for you. A polygon with minimum number of sides. आपको मैंने क्या बताया? Polygon बनाने के लिए हमें कितनी sides चाहिए minimum? हमें चाहिए 3 sides. So I hope you like this. I hope you like this part and stay tuned for the next session. Thank you so much.